Good morning from actually good afternoon from Mumbai airport. I am this close to missing my flight, which is why I'm going to be rushing and not talking to you too much. Flight में बैठ के बात करते हैं. Mumbai airport. Well, मुझे actually लगा कि I was going to be missing my flight, so I just ran and came to my gate. But happens that अभी भी time है. There's like 15 minutes. The pilot was standing right outside, so I went to check with him. But अभी भी there is some time, so I am going to go grab myself a quick coffee, and then we're going to be boarding that flight. Thank you. तो मेरी डायरेक्ट फ्लाइट थी मुंबई से बेंगलुरु बाय अकासा एयरलाइंस. मैंने शायद ये पहले भी बोला है, लेकिन आई स्टिल वांट टू स्ट्रेस इन द फैक्ट कि मुंबई से टेक ऑफ करते वक्त बाहर देखना मत भूलना. इफ यू हैव विंडो सीट, जस्ट लुक एट द ओशन. तो बेंगलुरु तो मैं पहुंच गई हूँ एंड इट्स अ वेरी वेरी क्राउडेड एयरपोर्ट फॉर सम रीज़न. आज बहुत ज़्यादा भीड़ है. देयर हैज़ बीन सो मेनी फ्लाइट्स दैट हैव लैंडेड ओवर हियर एट द सेम टाइम. तो मैं जा रही हूँ मेरे बैगेज बेल्ट की ओर. होपफुली मुझे बैगेज जल्दी मिल जाए. Before we kind of just move out of the airport, I want to show you guys the airport if you've not been to Bengaluru airport. And for those of you who stay in Bengaluru, this is something which is very fascinating for me. Every time I get down, I fly into Bengaluru. It's just so fascinating. No matter how many times I come, just the area outside the airport that's been built. The cafes, the restaurants. It's so cool. So I'm just going to quickly take a walk across that area. So I hope you now understand why I'm so fascinated by Bengaluru airport. It's just so cool. Anyway, I think I'm going to grab something to eat over here quickly क्योंकि मेरा जो मैंने जैसे कहा कि होटल 1 घंटे यहाँ से दूर है, तो might as well have something here and then leave instead of like taking a pit stop on the way. तो यहाँ पे बहुत options हैं, तो यहीं पे कुछ खा लेते हैं. Let's find something. So I ordered for jalapeno and cheese fries. दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है about Bengaluru airport is the Ola and Uber service. Unlike at least my home airport, which is Mumbai airport, जहाँ पे you book an Ola and Uber and then it's a task you have to go to another level to kind of go to the Ola or Uber pickup point and then the driver comes and then he picks you. यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे एक Ola Uber pickup spot यहाँ पे जो सामने दिख रहा है वो फिक्स्ड है और आपको ड्राइवर की डिटेल्स नहीं आते या ड्राइवर का गाड़ी का नंबर ऐसे नहीं आता. यू जस्ट हैव टू गो एंड स्टैंड एट द स्टॉप एंड विच एवर ड्राइवर्स नेक्स्ट लाइक यू स्टैंड इन अ लाइन एंड व्हेनेवर आपका नंबर आता है लाइन में तो आप जो भी गाड़ी वहाँ खड़ी है उसमें बैठ के जा सकते हो, which I think is really so convenient and so cool, because that way everybody actually gets an Ola Uber. कोई भी एयरपोर्ट बिना गाड़ी के नहीं निकलता. So I think that's really nice. And about an hour's drive later, मैं पहुंच गई अपने बेंगलुरु वाले होटल पे जहां I was to just stay the night. Alright, so hello from Bengaluru. मैं फाइनली मेरे रूम में चेक इन हो चुकी हूँ और आज एजेंडा पे कुछ ज़्यादा है नहीं. सो टुडे वाज जस्ट चिल डे. बेसिकली टुडे वाज ट्रैवल डे एंड हमारा टूर एक्चुअली जो मेन टूर है वो कल से शुरू होता है. इट्स अ रोड ट्रिप अक्रॉस द स्टेट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू एंटेल अ लॉट ऑफ एडवेंचर. इसमें बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ है. वाटर एक्टिविटीज़, there's jungles, there's jeep जंगल सफारीज, there's kayaking, there's other water sports.
there's a lot of stuff basically. So that is basically the agenda for this trip. और ये trip मैं आई हूँ कर्नाटका टूरिज्म के साथ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था टू एम्बार्क ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद देम। और एक कंपनी है जिसका नाम है मॉन्क्स ऑन व्हील्स। तो मॉन्क्स ऑन व्हील्स और जंगल लॉजेस जो है, इन्होंने मिलकर मुझे इनवाइट किया है। जंगल लॉजेस इज बेसिकली इन एसोसिएशन विद कर्नाटका टूरिज्म। जितने भी जो जंगल रिसोर्ट्स है, स्टेज है, ये सारे ये ऑर्गेनाइज करते हैं। और मॉन्क्स ऑन व्हील्स है, दीज गाइज आर एक्सपर्ट्स इन ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक्स एंड हाइक्स एंड अ लॉट ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज, बेसिकली ऑल फन स्टफ। ये है लाइफ ऑफ अ ब्लॉगर। एक ट्रिप पे हूँ, दूसरे ट्रिप का वीडियो अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे। This is how it works. Good morning from Bengaluru। सुबह के 6 बजे है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। आज का कॉल टाइम था 6 बजे एंड टुडे इज़ व्हेन आवर टूर एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हम यहाँ से बैंगलोर से अब निकल के कहीं पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट आई विल टेल यू इन अ वाइल। इट इज़ अ 6-hour journey and we are going to a tiger reserve. So stay tuned for all the exciting things in this vlog. तो हम निकले हैं बैंगलोर से एंड वी आर हेडेड टू द भद्रा टाइगर रिजर्व, जो यहाँ से 7 से 8 घंटे का जर्नी है विद पिट स्टॉप। सो वी टेकिंग ब्रेकफास्ट पिट स्टॉप्स, वी टेकिंग लंच पिट स्टॉप्स, उसके साथ 7 से 8 घंटे का कुछ जर्नी है। अदरवाइज इट इज़ अ 5 to 6 hour का ड्राइव। सो राइट नाउ वी स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। वी टेकन आवर फर्स्ट पिट स्टॉप व्हिच इज़ राइट ओवर हियर। और it's really fun connecting with fellow vloggers who are also with me, क्योंकि all of us are just literally vlogging, आप देख नहीं सकते, but I'll introduce to you कि मैं किसके साथ इस ट्रिप पे हूँ। There are 3 people who are on the bike and the rest of us are in the car. So anyway, अभी हम जाते हैं, पहले कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं and then more about the journey later. तो जैसे मैंने कहा, I am with a few other vloggers. Let me get you to actually introduce them to you. We have Nidhi. Hello. Hi Nidhi. Nidhi, what's your Instagram handle? Everybody should introduce with Instagram handles. So my Instagram handle, YouTube handle, everywhere I go by the name of Safarnama by Nidhi. Safarnama by Nidhi. Okay, and then we have Anu with us. I'm the Virgo compass. Anu is the Virgo compass. Okay, Yeah. and we have one more vlogger who's there. He is a moto vlogger. And Fans right now. yeah, he just met his fans. Okay, let's go introduce him. Okay, he's coming here. Aditya, can you introduce yourself please once again? Yeah, so hello, I'm Adityan. Actually, I'm called by the name Triple Rush. I'm from Bangalore, motor vlogger. So do check it out, my channel. And I think we'll have some fun here. They are here for the ride to go around to Karnataka. Yeah. We'll go around, have fun. We'll see. Check out the vlogs and don't miss any of the episodes. Don't miss any of the episodes. Alright, so that is a team of the 4 of us so far. I think we have one more person joining us from Mangalore, जो directly आएगा भद्रा रिजर्व पे. But फिलहाल तो we are 4 of us. So let's go. कर्नाटका की सीनिक सड़कें, कुछ फेलो क्रिएटर्स और शहर की नई एडवेंचरस जगहों को देखने के जोश के साथ हम सफर पे आगे निकल पड़े। So interesting pit stops. First we stopped for breakfast, which is dosa, and now we're stopping for और कुछ 7 घंटे बाद हम पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टे पर, रिवर टर्न लॉज दैट इज सिचुएटेड amidst द भद्रा रिवर। रिवर टर्न लॉज को अपना नाम मिला है पास ही के एक टापू से, जो हर साल 100 से ज्यादा रिवर टर्न्स, जो एक बर्ड होता है, उसे अट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। The lodge is located on a hillock on the edge of the Bhadra River and it's quite close to the Bhadra Tiger Reserve. ये आता है कर्नाटका के चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में। तो
तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारा जो फर्स्ट स्टे है इनके साथ यहाँ पे, एंड इट इज़ अ जंगल रिसोर्ट विच लुक्स सो ब्यूटीफुल बिकॉज इट इज़ एट द बैंक्स ऑफ द रिवर जो है इसके पीछे। मैं शो टू यू इन अ मिनट, बट दिस प्लेस ऑलरेडी हैज़ गॉट मी सो एक्साइटेड। यहाँ पे बहुत सारे सफारी जीप्स है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब there's an entire shop with all of your camouflaged like safari outfits and stuff like that. So super excited for this. Come, let's go check out what the rooms look like. So जैसे ही आप enter करोगे you'll see like this series of safari jeeps जो यहीं पे अंदर पार्क्ड है, यही लेके जाते हैं इसलिए। बात जब वाइल्ड लाइफ की आती है, nothing really comes easy, and forget about comfort for a few days, whether it is you're getting to a place or anything like that. 5 minutes back we started walking to get into the property. हवा पे भी चल रहे हैं, and as you can see मेरी सांस फूल रही है क्योंकि it was a bit of a climb. I actually pity the guys who are carrying our luggages. हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, but हम finally चल के पहुंच गए। Let's go. तो इस लॉज के 2 स्टे ऑप्शंस है, लॉग हट पैकेज जिसके कॉटेजेस रिसेप्शन के पास ही में है, या फिर कॉटेज पैकेज जहां पहुंचने के लिए यू नीड टू क्रॉस दिस ब्रिज। The rooms are quite comfortable, but सबसे बेस्ट बात है कि they open up to the view of the beautiful Bhadra River every time you wake up, or even when you head out to the balcony. So the great part about living in a wildlife resort of this sort is कि आसपास आपको ऐसे ही लगेगा कि आप एक जंगल के बीचों बीच रह रहे हो। Like for example, this one River Tern Lodge is, इसका USP ये है, this beautiful river which is behind me. तो every time you wake up from any of the rooms, आपको ये beautiful river ही दिखेगा सामने, and I think that is so gorgeous क्योंकि हम जब सिटी में रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, तो obviously we're so away from this kind of nature's beauty. So I'm glad that I'm here. इस लॉज का खाना टेस्ट वाइज सबसे बेस्ट था। देयर इज अ बुफे अवेलेबल जिसमें दोनों वेज और नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। I am excited. लंच हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बोट सफारी के लिए, जो मैं पहली बार कर रही हूँ। मैंने अभी तक सिर्फ जीप सफारी की है, बट वी आर डूइंग अ बोट सफारी टुडे व्हिच इज डिफरेंट। सो सफारीज इसके अगर आपका लक हुआ तो शायद आपको यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिखेंगे, बट इनका भी माइग्रेशन सीजन वगैरह होता है। सो ऑब्वियसली देयर आर माइग्रेटरी बर्ड्स हु माइग्रेट अवे फ्रॉम हियर, समटाइम्स दे माइग्रेट इनटू दिस प्लेस। सो इट रियली डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, देयर इज नो लाइक फिक्स टाइम जब बोल सकते कि यही टाइम पे या यही जगह पे स्पॉट होगा। Actually, the right side there, the main Bhadra Dam. 4 gates there, and the compartment gates. And the total depth 186 feet, the bottom to top level. One of the best ways to bond with your group, I feel, is experiences like this. Think of a motorboat cruising past the soft waves, the sound of just the water splashing and the birds around. दूर दूर तक बस crystal clear पानी, हाथ में बाइनोक्यूलर्स और मन में कुछ एक्सोटिक नए बर्ड्स या एनिमल्स को स्पॉट करने की एक्साइटमेंट। नाउ दैट इज व्हाट अ बोट सफारी इज फॉर यू। हमने काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स को स्पॉट किया, कुछ स्पॉटेड डियर्स, सम एलिफेंट्स इन देयर ओन हैबिटेट बेथिंग, एंड एवरीथिंग calming and soothing that this ride had to offer. हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम डे 2। हम यहीं पे है भद्रा रिवर रिजॉर्ट के पास ही।
में ही एक्चुअली। एंड अभी बजे हैं सुबह के 6:30। हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं एक जीप सफारी के लिए। तो कल जो आपने देखा था दैट वाज अ बोट सफारी, टुडे वी गोना गो ऑन अ जीप सफारी। एंड ऑब्वियसली जैसे कि कोई भी सफारी होती है, मतलब यू हैव टू रियली बी लकी टू बी एबल टू स्पॉट एनिमल्स। तो आज भी वही सीन है। वी आर हेडेड आउट, लेकिन और ये 2 घंटे का सफारी होता है। तो लेट्स सी इफ वी आर लकी टुडे वी माइट स्पॉट सम एनिमल्स। ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. जंगल रिजर्व में कहते हैं कि काफी सारे लेपर्ड स्पॉटिंग होते हैं, बट विद एनिमल्स इट्स ऑलवेज अबाउट लक। हमारे बाकी के लोग भी हमें ज्वाइन कर लिए। हैविंग सम फ्रेश lemongrass tea. Here is the lemongrass that it was plucked from, and here is the tea fresh. Alright, तो जंगल सफारी हैज़ बीन डन और हम वापस आ चुके हैं रिवर टर्न में, जो हमारा रिसोर्ट है। इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एक्चुअली, यू नो। ऐसा कुछ शहर से दूर आके किसी नेचुरल हैबिटेट में, ऐसी जगह कर्नाटका जैसी जगह पे आके, यू नो, टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस इज़ जस्ट सो ब्यूटीफुल। एंड लेट मी टेल यू दैट दीज काइंड ऑफ सफारीज आर नॉट जस्ट अबाउट स्पॉटिंग लाइक द बिग कैट्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स. It's so much about like just being one with nature, you know, and trying to like just absorb everything that nature has to offer. It's just a beautiful experience on the whole. So there is going to be a change in my mode of commute for the day. I'm going to be joining the bikers on their bike because there's a different fun of actually doing that. कभी रॉयल एनफील्ड पे तेज रफ्तार से हवा को काटते हुए गए हो? I highly recommend a bike trip for anybody who hasn't tried it before, क्योंकि trust me, एक बार आप बाइक पे बैठे then there's no going back. Coconut water apparently is like 1 liter of water. 1 liter. Unlimited energy. That's very heavy also. It's like holding a whole water bottle. Oh my god. Okay, so break time is over. अब हम जा रहे हैं वापस. The bikers on the bike and the car people in the car. हम आज एक्चुअली जा रहे हैं शिवमोगा, जो हम जहाँ से निकले थे रिवर भद्रा से, वहाँ से इट इज़ लाइक 2.5 hour ish का ड्राइव. सो वी स्टिल हैव सम मोर रूट टू कवर, सो लेट्स गो. Located at a close proximity to the river and dense forests, Sharavathi Nature Camps is the perfect place to be one with nature. तो हम शरावती नेचर कैंप पहुंच गए हैं, विच इज़ आवर सेकेंड स्टे ऑन दिस ट्रिप, एंड इट सीम्स प्रीटी एक्साइटिंग. अभी यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल रिवर है, वैसे जैसे जो पहले वाला था. देयर इज अ रिवर ओवर हियर एंड या एंड वी आर काइंड ऑफ राइट हियर. हम पहले आए एक्चुअली लंच के लिए. हम सबसे पहले कुछ लंच खाएंगे और फिर हम रूम्स में चेक इन करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर लाइक सुप्रीमली हंग्री. यहाँ पे भी देयर इज लाइक अ बुफे सिस्टम. दिस इज सम वेजिटेबल. This is also vegetable too, which looks very yummy actually. I think this is in coconut milk definitely. There's curd rice. There's normal rice.
dal, and my favorite rasam. Alright, तो lunch हो चुका है, पेट भर के. Like I've had 3 bowls of payasam. It feels so good. Now we're going to be checking into our rooms. क्योंकि we need to rest for a bit. Let's go check out the rooms. The rooms are comfortable और पिछले स्टे की तरह इसका भी बालकनी व्यू इज ऑफ द शरावती रिवर. और यही तो खासियत है जंगल लॉजेस के स्टेज की कि दे मेक श्योर कि आप जब भी इनके स्टेज में रहो यू आर लिटरली फीलिंग वन विद नेचर. और तो रूम में चेक इन करने के बाद इन लाइक अनदर 10-15 minutes I was just in the room और फिर अभी हम निकले हैं to go and enjoy some water sports because that is what this resort specializes in. जैसे कि आपने पिछले रिजॉर्ट में देखा था वहाँ की खासियत थी उसका जंगल सफारी और बोट सफारी. बट यहाँ पे in this resort in Sharavathi resort we are going to go and enjoy some water sports. So I'm really excited. I just wanted it all. I just toppled the life jacket. That was saving me from toppling. ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. I think there was no better way to end this eventful day क्योंकि रिवर साइड पर बैठकर we got to witness one of the most beautiful sunsets that you can imagine. और बस ऐसे बैठे बैठे शाम की कब रात हो गई पता ही नहीं चला. We are doing like some scavenger hunt. Are you recording or simply? We are doing snake hunt. We're doing snake hunt on this road which has oh my god, creepsters which has nothing here and there. My god, can you all see like some human form walking? Oh my god, run. Oh no, that's our captain. That's Team Bravo's captain. Team Bravo captain almost scared the shit out of us. Come on, let's go. Let's go. Let's find the snake. Yeah. Like that. I thought if not snakes, at least some lizards. Some lizards at least. That you want to find? Come to my room. Come. Oh my god. Hello and a very good morning from Sharavathi Nature Camp. Well, अभी हम जा रहे हैं to the very famous Jog Falls and the great part about this property is कि ये जो property है जो Sharavathi Nature Camp है this is like just 20-25 minutes away from the famous Jog Falls. So ये यहाँ से आपको सफारी वगैरह के लिए लेके जाते हैं जैसे मैंने कल दिखाया कि वाटर स्पोर्ट्स भी कराते हैं. But they also take you like on excursions for like you know visiting the Jog Falls. So since it's so close to us, हम भी आज Jog Falls जा रहे हैं अभी सुबह के 6:30 बजे. मैं जा रही हूँ पहले तो रेस्टोरेंट, वहाँ से पहले quickly I will grab a coffee and उसके बाद we will be leaving with the hotel guys itself to see the Jog Falls. So let's go. Just quickly sneaking in a banana like. So we've had our coffees and now we are on the way to Jog Falls. Let's go! तो होटल के ही जीप में we head towards one of the best offerings by the property, a visit to the mighty Jog Falls. Jog Falls शरावती से बस 20 मिनट की ही ड्राइव पर है. Finally Jog Falls पहुंच चुके हैं and it looks so spectacular. Are you guys ready to see? It was really ready to see. Let's go.
So this is quite an interesting route to get to like the foot of the falls. It's like a mini sort of a trek down, I would say. So make sure you wear like good strong grip shoes because it can be slippery. Like it's not wet, but like it's soft mud, so you can tend to like slip if you don't take care. क्या आपको पता है कि जोग फॉल्स इंडिया का सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है? प्लंज यानी कि वाटरफॉल दैट डजंट कैस्केड थ्रू स्टेप्स बट डायरेक्टली इन अ सिंगल फॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये वाटरफॉल 4 छोटे स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है, राजा, रानी, रूरर और रॉकेट, बेस्ड ऑन द फोर्स ऑफ द वाटरफॉल। फिलहाल इस वाटरफॉल को एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अलावा इस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ इस बड़े से वाटरफॉल के सामने बैठकर मुझे ऐसे लगा कि नेचर इज जस्ट सो माइटी और हम उसके आगे बस एक छोटा सा हिस्सा। तो वो जिस स्पॉट से हमने अभी वाटरफॉल देखा था वो एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, वहाँ पे सब लोग नहीं जा सकते। दैट इज़ ओनली बिकॉज वी हैड कम विद द टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसलिए। बट हियर इज़ वेयर ऑल ऑफ यू कैन एक्चुअली सी द वाटरफॉल्स फ्रॉम। इट इज़ लाइक अ टेलीस्कोपिक व्यू पॉइंट एंड इट इज़ सो गॉर्जियस। लेट मी शो यू। Okay, so we are done with touring at the Jog Falls. ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। बट मुझे एक चीज़ आपको बतानी है कि when you come to the Jog Falls, please be extremely careful. मतलब एक्साइटमेंट के मारे don't like start running around and like going crazy over photos, because the only reason is कि जो Jog Falls का पूरा एरिया है बिल्कुल भी fenced नहीं है। It's completely open and the stones that are like that are towards the end of the cliff are like very slippery and are like edgy. So there are very high chances of you just slipping and falling into the water. और बहुत लोगों के साथ हो चुका है। यहाँ पे जो गार्ड्स हैं हमें बता रहे थे कि बहुत लोग इसमें गिर चुके हैं and then their bodies were not retrieved as well. So please be very careful when you come over here क्योंकि fencing नहीं है। But other than that, please enjoy the most because this place is so beautiful, it's so gorgeous. और एक और recommendation मैं देना चाहूँगी कि जब आप आ रहे हो यहाँ पे तो come early morning, like the earliest that you can come, because that is when आपको धूप इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। और जो falls हैं they are actually situated at such a place कि जहाँ पे light against हो जाती है, तो photos videos लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। So try and position yourself in such a way, try and come at such a time जहाँ पे आप बहुत early morning आ रहे हो ताकि आपको ज़्यादा धूप भी ना मिले and you can get like the perfect lighting to get the amazing shots at Jog Falls. Well, तो इस एपिसोड के लिए इतना ही and I hope you guys enjoyed watching episode 1 from Karnataka. It's such a gorgeous landscape. I cannot even stress on that even more. But I will see you guys in episode 2 जिसमें हम और भी बहुत सारी exciting चीज़ें देखने वाले हैं। We're going to go to few more jungles and to few more jungle resorts and a lot more adventure that awaits us. So stay tuned for episode 2. Until then, goodbye. खैर आप बने रहना क्योंकि in the next episode we will be continuing this road trip with more fun, more adventure, some extremely different landscapes and more. Until then, goodbye.